committed to restoring the inflation growth balance. I repeat, the MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting, and also to continue with the neutral stance of monetary policy, as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I would like to begin with the global growth scenario. The global economy has shown unusual resilience in 2024, despite several headwinds. Inflation is gradually moving towards the target from its multi-decadal highs, prompting several central banks to embark on policy pivots. Global trade remains resilient, with increasing volumes confined within geographical blocks. Since the last MPC meeting, financial markets have remained edgy amidst rising US dollar and hardening bond yields, resulting in large capital outflows from emerging markets and also in volatility in equity markets. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism. I'm talking about the global economy. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism, which have the potential to undermine global growth and also push inflation higher. Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based, but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. The end of the monsoon season and the expected pickup in government capital expenditure may also provide some impetus to cement as well as iron and steel sectors. Mining and electricity are also expected to normalize post the monsoon-related disruptions. I specifically commented on these sectors, that is on manufacturing, on electricity, and also on mining and iron and steel, as well as on cement, because these were the sectors, particularly in manufacturing, mining, and electricity demand, which were the principal factors which pulled down the GDP number in second quarter. So that's why I have focused how these three sectors are expected to behave in the current quarter as well as in the next quarter. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing at 56.5 for November, remained elevated. The supply chain pressures eased in October, November, and fell below the historical average. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services remained steady at 58.4 in November, indicating continued expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards, while urban demand shows some moderation on a high base.
Government consumption is improving. Investment activity is also expected to improve. On the external front, exports expanded by 17.2% in October, while services exports continued to post upbeat growth at 22.3% in October. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9%, and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly. I would now like to focus on inflation. Inflation increased sharply in September and October 2024, led by an unanticipated increase in food prices. Core inflation, though at subdued levels, also registered a pickup in October. Fuel group remained in deflation for the 14th consecutive month in October. In the near term, despite some softening, lingering food price pressures are likely to keep headline inflation elevated in the third quarter, that is, in the quarter October to December. Going ahead, a good Rabi season would be critical to the softening of food inflation pressures. Early indications point to adequate soil moisture content and reservoir levels, conducive for Rabi sowing. The estimates of record Kharif production should bring relief to elevated prices of rice and tur dal in particular. Vegetable prices are also expected to see a seasonal winter correction. On the upside, the evolving trajectory of domestic edible oil prices following the hike in import duties and rise in their global prices need to be monitored closely. Manufacturing and services firms surveyed by the Reserve Bank point to firming up of input costs and selling prices in the fourth quarter of the current financial year, that is in the quarter January to March. Taking all these factors into consideration, CPI inflation for the current financial year, that is 24-25, is projected at 4.8%, with Q3 at 5.7%, Q4 at 4.5%. Going into the next financial year, CPI inflation for the first quarter of 25-26 is projected at 4.6% and Q2 at 4%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have described the growth conditions. I have described the inflation conditions. Now, what do all these factors mean for monetary policy? And that is what I would like to now highlight. The near-term inflation and growth outcomes in India have turned somewhat adverse since the last monetary policy in October. The medium-term prognosis on inflation suggests further alignment with the target, while growth is expected to pick up its momentum. Persistent high inflation reduces the purchasing power of consumers and adversely affects both consumption and investment demand. The overall implication of these factors for growth is negative. Therefore, price stability is essential for sustained growth. On the other hand, a growth slowdown, if it lingers beyond a point, may need policy support. The Reserve Bank's anti-inflationary monetary policy stance has been a crucial factor in bringing about a significant disinflation. Going forward, as food price shocks wane, headline inflation is expected to ease and realign with the target
as per our projections, which I just read out. At present, it is necessary to draw on the flexibility provided by the neutral stance of monetary policy to wait for and monitor the incoming data for confirmation of the decline in inflation. The gains achieved so far in the broad direction of disinflation, notwithstanding the recent upticks, need to be preserved. At the same time, the growth trajectory and the evolving outlook also need to be monitored very closely. At this critical juncture, prudence and practicality demand that we remain careful and sensitive to the dynamically evolving situation with all its complexities and ramifications. A status quo in monetary policy in this meeting of the MPC has thus become appropriate and essential. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. System liquidity, as represented by the net position under the LAF, that is net LAF, that is net liquidity adjustment facility, it continued to remain in surplus during October and November on account of higher government spending, despite a significant increase in currency in circulation during the festive season and capital flows. Of course, towards the end of November, for a few days, the liquidity became tight, but overall, I think there was adequate liquidity both in October and November, and it remained surplus. Given these conditions, the Reserve Bank mainly conducted variable rate reverse repo operations, that is VRRR operations, to absorb surplus liquidity. To alleviate temporary liquidity tightness because of large GST outflows, however, fine-tuning variable rate repo operations, that is VRR operations, were conducted intermittently during October and November. The two-way liquidity operations of the Reserve Bank ensured close alignment of the interbank overnight rate with the policy repo rate. Transmission to the credit market has been satisfactory. As you would have noticed, as in the previous monetary policy statements, lot of data is given in the footnotes. So those of you who are interested may have a look at the footnotes, because the data in the footnotes justify and back up whatever I am saying as a part of my statement. Now, even as liquidity in the banking system remains adequate, system liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. And this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. This will restore the CRR to 4% of NDTL, which was in fact the prevailing rate before commencement of the policy tightening cycle in April 2022. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore, to the banking system. Going forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and proactive in its liquidity management operations to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner and the productive requirements of the economy are met. During 2024-25, that is from the period April to November, the Indian rupee depreciated by 1.3%, largely due to pressure from strengthening US dollar and selling pressure by foreign portfolio investors, especially in October and November. Nevertheless, both the depreciation of the Indian rupee and its volatility was less compared to its EME peers.
And this reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improvement in the external sector outlook. The Reserve Bank's exchange rate policy has remained consistent over the years, and it is market determined. Its central tenet is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. Foreign exchange reserves are deployed judiciously to mitigate undue volatility, maintain market confidence, anchor expectations, and preserve overall financial stability. These interventions focus on smoothing excessive and disruptive volatility rather than targeting any specific exchange rate level or band. At the same time, our effort to deepen and modernize the foreign exchange market have also yielded significant results in terms of, first, widening access and participation, and second, ensuring efficiency and ensuring efficient price discovery. Our overall approach ensures that forex reserves act as shock absorbers, safeguarding the economy from external spillovers while supporting competitive and orderly market conditions. The flexible or market-determined exchange rate regime is not merely a tool for managing external shocks. It is an important element of our approach to macroeconomic and financial stability. By combining market discipline with prudent intervention, we have created a system that supports stability, resilience, and growth. Let me now focus on financial stability. The financial parameters of banks and NBFCs continue to be strong. The incoming data suggest that the gap between growth of credit and deposits of scheduled commercial banks has narrowed, with deposits keeping pace with loan growth. In fact, on the financial sector, I can say with confidence that I think the health of the financial sector today is perhaps at one of its best in a long time. The Reserve Bank's supervision of the financial sector and its entities continues to be vigilant and proactive. Incipient signs of stress, if any, either at the systemic or entity levels, are monitored closely and proactive action is initiated. The effort is always to resolve the issues non-disruptively. Continuous engagement is held over several months, sometimes even exceeding 1 year, with the regulated entities. Only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. In fact, there are a large number of entities where the corrective action is taken and where we simply do not take any action because the response by the regulated entities is found to be, very proactive and, very responsive. And so in many cases, without imposing any restrictions on their business or other kinds of activities, the problem gets resolved. Obviously, the list is not known outside. That list is much longer. And the total number of entities, I'm not being defensive about it or in any way. Why I'm emphasizing on this is that this is something which we have to do in the interest of stability of the system as well as the stability and health of the individual entities. So only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. To address the issues of unclaimed deposits, inoperative accounts, and frozen accounts due to pendency of KYC updation, banks have been advised very recently, once again, to take necessary steps urgently to bring down the number of such accounts and make the process hassle-free. Further, banks have been advised to segregate the accounts of beneficiaries of various central and state government schemes through direct benefit transfer, that is DBT,
and facilitate uninterrupted credit of the DBT amounts into their accounts, and also of the DBT amounts by the account holders. And we have advised the banks to do it without inconveniencing such vulnerable segments of customers, because the DBT beneficiaries are usually, and they are the vulnerable sections of the society. So being fully mindful of that, we have emphasized that there should be a kind of a seamless and smooth flow of DBT amounts into the bank accounts of such individuals in a situation so that it facilitates, the individuals to withdraw the money to meet their various requirements. Progress made by individual banks in this regard will be monitored by the Reserve Bank. I would now like to turn to the external sector. The statement today is a bit, because we have too many announcements, so I request your continued patience. External sector. India's merchandise exports expanded at a 28-month high pace in October. Merchandise imports also increased for the 7th consecutive month. Services exports sustained buoyancy and posted double-digit growth in second quarter as well as in October 2024. The robust services exports, together with strong remittance receipts, are expected to keep the current account deficit within sustainable levels during 24-25. On the external financing side, gross FDI to India increased at a robust pace. I'm talking about gross. The gross FDI into India increased at a robust pace during the first half of the year. Net FDI, however, moderated during this period due to higher repatriations and rising outward FDI. Foreign portfolio investment, that is FPI inflows to EMEs have generally declined in October. Net FPI inflows to India stands at US dollar 9.3 billion so far in the current year, that is from April to December 4th. And this was supported mainly by inflows in the debt segment. External commercial borrowings and non-resident deposits, on the other hand, witnessed higher net inflows compared to the last year. India's external sector remains resilient, as reflected in various key indicators where India has been consistently performing well. And the key indicators and the data they are given in the footnotes. In order to attract more capital flows, in order to attract more capital inflows, it has been decided to increase the interest rate ceilings on FCNRB deposits. Accordingly, effective from today, banks are permitted to raise FCNRB deposits of 1 year to less than 3 years maturity at rates not exceeding the ceiling of overnight alternate reference rate, that is overnight ARR, plus 400 basis points as against 200 basis points at present. So in addition to the overnight ARR, currently the banks are allowed a spread of 250 basis points that is being increased to 400 basis points. Similarly, for deposits of 3 to 5 years maturity, the ceiling has been increased to overnight ARR plus 500 basis points as against 300 basis points at present. This relaxation will be available till 31st March 2025. I shall now announce certain additional measures. I again request your patience because the additional measures, they are very important. The first one relates to the FX retail platform, and this is how it is. The FX retail platform, which was launched in 2019, is now proposed to be linked with the Bharat Connect platform of the NPCI. This would enable users to transact on the FX retail platform through mobile apps of banks and non-bank payment system providers. This will expand the reach of FX retail platform, enhance user experience, and promote fairness and transparency in pricing with adequate safeguards. The second announcement relates to introduction of secured overnight rupee rate, SORR,
a benchmark based on secured money markets. With a view to further develop the interest rate derivative market in India and improve the credibility of interest rate benchmarks, the Reserve Bank proposes to introduce a new benchmark, namely Secured Overnight Rupee Rate, that is SORR, which is based on all secured money market transactions, that is overnight market repo as well as TREPs. The third announcement relates to Connect to Regulate, an initiative for open regulation. As part of Reserve Bank's consultative approach in framing regulations, a new program, namely Connect to Regulate, will be launched under the ongoing RBI at 90 commemorative events. A dedicated section in the Reserve Bank's website will be made available for stakeholders to share their ideas and inputs on specific topics. So we will give out a specific topic on that. We are not going to upload a discussion paper or anything, but we will just mention the topic, and we would like all stakeholders to give their opinion, suggestion, and thoughts to the RBI. So it is that makes our process of consultation much wider and much more flexible, which has been our approach over the last few years. Next announcement is introduction of podcast facility as an additional medium of communication. Over the years, the Reserve Bank has expanded its communication toolkit and techniques to enhance transparency and better connect with the people. In continuance of this endeavor, the Reserve Bank proposes to add podcasts to its communication toolkit for wider dissemination of information. And the next announcement, which I am going to read out, is very important for the agricultural sector, especially for small farmers. And that relates to collateral-free agricultural loan enhancement of limit. The limit for collateral agricultural loans was last revised in 2019. Taking into account the rise in agricultural input costs and overall inflation, it has been decided to increase the limit for collateral-free agriculture loans from rupees 1.6 lakh crore per borrower to rupees 2 lakh per borrower. This will further enhance credit availability for small and marginal farmers. The next announcement relates to UPI. A credit line on UPI was launched in September 2023 and was made available through scheduled commercial banks. It has now been decided to permit small finance banks also to extend pre-sanctioned credit lines through the UPI. This will further deepen financial inclusion and enhance formal credit, particularly for the new-to-credit customers. Next announcement relates to artificial intelligence, its deployment in a very prudent manner. The financial sector landscape is witnessing rapid transformation enabled by technologies such as AI, tokenization, cloud computing, etc. In order to harness the benefits from these technologies while addressing the associated risks such as algorithmic bias, explainability, data privacy, etc., a committee comprising of experts from diverse fields will be set up to recommend a framework for responsible and ethical enablement of AI. I repeat, a framework for responsible and ethical enablement of AI, and the acronym is Free AI in the financial sector. The last announcement relates to dealing with mule accounts. As part of the Reserve Bank's continued efforts to prevent and mitigate digital frauds, an innovative AI/ML-based model, namely the MuleHunter.ai, has been developed by the Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru. This will help the banks to deal with the issue of mule accounts expeditiously and reduce digital frauds. Let me now conclude.
The world today is characterized by intricate complexities and profound uncertainties. As a central bank, our job is that of an anchor of stability and confidence, which would ensure that the economy achieves sustained high growth. Since the last policy, that is, since the October policy, inflation has been on the upside while there has been a moderation in growth. Accordingly, the MPC has adopted a prudent and cautious approach in this meeting to wait for better visibility on the growth and inflation outlook. At such a critical juncture, prudence, practicality, and timing, I repeat, at such a critical juncture, prudence, practicality, and timing of decisions become even more critical. Our endeavor in the Reserve Bank has always been to implement timely and carefully calibrated measures to derive the maximum impact. This will continue to be the guiding principle for all future actions also. As Mahatma Gandhi had said, and I quote, "There is nothing that cannot be attained by patience and equanimity." In the last few years, we have traversed one of the most difficult periods in the history of the Indian economy and perhaps in the global economy. And this has been a very difficult period in the economic history, in the history of Indian economy and the global economy, just as I pointed out. It was a period of relentless turbulence and jolts. As a country, we can derive satisfaction that the Indian economy has not just navigated this period of trials successfully, but has emerged stronger. As we strive together towards making India a developed economy, I recall what I had said in my statement of February 8, 2023, wherein I had quoted Netaji Subhash Chandra Bose, "Never lose your faith in the destiny of India." Thank you. Namaskar. Likely to keep headline inflation elevated. What are the principal factors which pull down the GDP in the second quarter of this year? Repeat, the impact of the current financial year and to the emerging market economies. Continuous in mind the objective of monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I'm sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act. The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, is expected to maintain price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस खास शो में। और अभी हम सुन रहे थे शक्तिकांत दास को, आरबीआई गवर्नर को, जो बता रहे थे कि किस तरह से दिक्कतें हैं इकोनॉमी के सामने, किस तरह से महंगाई की, ग्रोथ की चुनौती पैदा हुई है, किस तरह से जो Q2 था वहां पे जो ग्रोथ के नंबर आए हैं वो उम्मीद से काफी कम थे। तो उसको लेके फिर जो आरबीआई के जो ऐलान हुए हैं उसमें उन्होंने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है। ये एक बड़ा आज का रिजर्व बैंक का फैसला है।
महंगाई को लेके और बाकी चीजों को लेके आरबीआई गवर्नर ने आज कुछ अहम ऐलान और बातें जिक्र किया है। उन्होंने उन्होंने ग्रोथ को लेके भी नंबर बताया है, जो 2% का ग्रोथ का नंबर FY25 के लिए दिया था, उसको कट कर दिया है और उसको अब 6.6% कर दिया है। इस पूरे मसले पर रिजर्व बैंक का जो स्टैंड है इन्फ्लेशन को लेके, ग्रोथ को लेके, और आज जो रुख लिया कि रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की, जो सस्ते लोन का जो उम्मीद थी आज लोगों की, वो एक तरह से टूट गई। और आने वाले वक्त में कब रेट कट होगा उसका अभी इस तरह से आज की जो कमेंट्री है रिजर्व बैंक के गवर्नर की, उससे कोई अंदाजा नहीं लगता दिखाई दे रहा। तो इस पूरे मसले पर आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र वाधवा, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एसकेआई कैपिटल के, और सेबी की कई कमेटीज के मेंबर हैं, और पीएचडी चैम्बर्स के भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल हैं, फिक्की के और एसोचैम के। तो नरेंद्र वाधवा सर से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरह का आरबीआई गवर्नर का जो रुख है उससे क्या संकेत मिल रहा है। सर, आरबीआई गवर्नर की आपने पूरी स्पीच सुनी, आपको आपको क्या की पॉइंट्स आप अगर इसमें से निकालें तो क्या आपको सर समझ में आ रहा है? नमस्कार, मेरे को आपके चैनल पे आने के लिए। देखिए, जी। ये एक्सपेक्टेड था कि या तो बहुत कम रेपो रेट के अंदर चेंज होने की उम्मीद थी, लेकिन जो इन्फ्लेशन के फिगर और जो ग्रोथ की फिगर आई है उसको जी। देखकर लग रहा था कि भाई टेम्पर्ड रहेंगे। ये वाला जो रेट का ट्वीकिंग है वो अगले बारी में शिफ्ट हो जाएगी। तो वही हमने सुना है आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री के अंदर। काफी जो ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काफी बोला है कि अब स्लगिश ग्रोथ है, और लेकिन वो स्लगिश ग्रोथ के वजह से तो हमारे को इंटरेस्ट रेट का लगता था कि कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना हुआ है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर है, उसको देखते हुए कॉशियस इन्होंने स्टांस लिया है। लेकिन साथ के साथ सीआरआर कट के अंदर जो 50 बेसिस पॉइंट की इन्होंने कटौती करी है, जो कि 4% है, इससे थोड़ा सा हेडरूम मिलेगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो है वो काफी हो जाएगी, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो अपनी एक कॉल ले पाएंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट में थोड़ा ट्वीक करना है कि नहीं करना। ये एक पॉजिटिव मूव है, लेकिन जो कमेंट्री है वो काफी स्लगिश है। जी, जो सीआरआर कट की आप बात कर रहे हैं उसमें आधा आधा 0.25 बेसिस पॉइंट की दो ट्रेंचेस में कटौती करने की बात कही है, और हम जो एक्सपर्ट्स की कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि 0.25% का अगर कट होता है सीआरआर में तो उससे तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी, बैंकिंग सिस्टम में। सर, इसका ओवरऑल आप असर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टर के जो ग्रोथ के नंबर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का जैसे वीकनेस नजर आई है, स्लो डाउन की एक बात कही जा रही है, क्या सीआरआर में कट इकोनॉमी को, बैंकिंग सिस्टम में अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या उससे इकोनॉमी को ग्रोथ में फायदा मिलेगा? देखिए, लिक्विडिटी जो पीछे 1-1.5 महीने में हमारे को फिगर्स आ रही थी, उसमें लिक्विडिटी पे काफी प्रेशर था। सीआरआर कट से क्या होता है कि एडिशनल लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम पे आती है। जैसे आपने अभी फिगर करी कि 25 बेसिस पॉइंट अगर कम करते तो 59,000 करोड़ जो है वो सिस्टम के अंदर आना था। तो इसी को आप देख लीजिए, 1-1.25 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी है सिस्टम में आती है। जब भी सिस्टम में लिक्विडिटी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, अगर एडिशनल लिक्विडिटी आती है तो लेंडिंग रेट पे भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम जो बैंक्स हैं वो सोचेंगे कि उसको नीचे किया जाए। तो ये अच्छी न्यूज है। जो ग्रोथ की नीचे आने की वो थी पिछले क्वार्टर के अंदर, काफी ग्रोथ टेम्पर्ड थी, नीचे आई थी, तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा इसको। बिल्कुल सर, आपने अच्छा, जो एक बात और मैं समझना चाहूंगा, जो ग्लोबल सिनेरियो को लेके कमेंट्री की है गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्शनिज्म है, और जो दुनिया भर में जो हालात हैं, ट्रम्प साहब की वापसी हो रही है, जनवरी में मिड में आ जाएंगे वो, सत्ता संभाल लेंगे, इंडिया स्पेसिफिक क्या असर देख रहे हैं, और जो आरबीआई गवर्नर जो कमेंट्री कर रहे हैं उसका ओवरऑल असर किस तरह से पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, ट्रम्प साहब 30 को ज्वाइन करेंगे, जनवरी में ज्वाइन करेंगे, और उनके पिछले टेन्योर के अंदर भी उन्होंने टैरिफ के अंदर काफी
वो रखा था, फोकस कर रहा था कि जो भी कंट्रीज में वो अपने सेल्फ, जैसे पूरा वर्ल्ड जो है एक बार ग्लोबलाइजेशन की तरफ आया था, तो ट्रम्प एरा के अंदर क्या हुआ था, जैसे अमेरिका फर्स्ट और सारी कंट्रीज ने अपनी कंट्री से प्रोटेक्टिज्म जो है वो बढ़ गया था और वो टैरिफ के थ्रू किया गया था। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है टैरिफ के अंदर काफी ट्वीक होगा यूएस के अंदर, और लेकिन उनके यहाँ पर भी एक प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे हम जूझ रहे हैं, यूएस भी जूझ रहा है। अगर वो टैरिफ्स को बढ़ाते हैं तो वहां पर महंगाई के ज्यादा बढ़ने की फिर उम्मीद मानी जाएगी। तो इससे जेस्चर, ये आर्म ट्विस्टिंग है, और इसमें इतना नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा था ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी लेकर आता है तो हम 100% टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये एक जेस्चर है, एक वो आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की गई है। इतना तो नहीं होगा 100%, क्योंकि उनको भी सेनेट में जाने की जरूरत पड़ती है जब भी 100% टैरिफ वगैरह है। लेकिन टैरिफ का डेफिनेटली यूएस जो है ट्रम्प एरा आने के बाद, ट्रम्प जी जब ज्वाइन करेंगे तो वो टैरिफ से जरूर उसमें प्ले करेंगे कंट्रीज के साथ। हाँ, ये क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सिनेरियो प्रोटेक्टिज्म हो रहा है अपनी अपनी कंट्री में, जैसे हम भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया और बाहर से इंपोर्ट कम करा जाए, यहीं पर बनाया जाए। तो यही पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज की हुई है, जिसकी वजह से हमारे को लगता है कि गवर्नर ने इसकी कमेंट्री दी है कि हमारे को कॉशियस रहना चाहिए, और उसी के बेस पे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखा है। जो चाइना वाला एक फैक्टर है, चाइना पे ज्यादा टैरिफ लगाने की बात आ रही है। ट्रम्प रिजीम जब शुरू होगी तो उसके बाद चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर और सख्त हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन युआन को सस्ता कर सकता है, उसका डिवैल्यू कर सकता है जानबूझ के। क्या उस चीन और यूएस के जो वॉर है का जो ट्रेड को लेके जो आप, क्या उससे भारत को फायदा होगा? और इस जो सिनेरियो में जो महंगाई का सिनेरियो है, स्लो डाउन की जो चीजें दिख रही हैं, क्या एक चीन वाला फैक्टर थोड़ा इंडिया के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है सर? देखिए, चाइना प्लस वन की पॉलिसी जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जो भी है इंडिया उसके अंदर मेजर बेनिफिशियरी है। अगर टैरिफ के अंदर फिर ट्वीक होता है, जैसे पीछे हमने स्टेटमेंट सुनी है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प की तरफ से, तो उसका डेफिनेटली फायदा इंडिया में होगा। बट चीज ये देखने वाली है कि जैसे ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने बोला है, तो हम डेफिनेटली हमने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बड़ी कॉन्शियस है इसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाया जाए। इंडिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है चाइना प्लस वन में, और बेनिफिशियरी रहेगा अल्टीमेटली। बट टैरिफ के अंदर हमारे को देखने की जरूरत है कि वो क्या स्टैंस लेते हैं, यूएस क्या स्टैंस लेता है। लेकिन हम पॉइज्ड हैं। एफडीआई की फिगर, मैं कल किसी चैनल पे था, हम डिस्कस कर रहे थे, एफडीआई जो है पिछले 6 मंथ्स के अंदर पिछले साल से 45% अप है। तो हमारे यहाँ पर एफडीआई जो है वो दर्शाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जोर लगा रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब या सेमीकंडक्टर हब या ईवी हब देखना चाह रहा है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, उसमें जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें पिछले कुछ वक्त में कमी आई है। कुछ आरबीआई ने संभवतः डॉलर्स की भी बिक्री की है, क्योंकि रुपए प्रेशर में लगातार बना हुआ और ऑल टाइम लो पे रुपए को हमने जाते हुए देखा है। क्या इस सिनेरियो में वहां कुछ कदम उठाने की सरकार के मोर्चे पे या रिजर्व बैंक के मोर्चे पे जरूरत है? और आज की कमेंट्री के साथ अगर हम उसको लिंक करें तो आप उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ पर एफपीआई सेलिंग काफी हुई है अक्टूबर में और नवंबर के अंदर। 1,35,000 से 50,000 करोड़ के अराउंड हमारे यहाँ बिकवाली हुई है, और वो पैसा बाहर गया था, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर था, हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर था। तो लेकिन ये रिवर्स हुआ है। ये टिपिकली नवंबर दिसंबर के अंदर होता है, जबकि एफपीआई सेलिंग आती है और पैसा वापसी जाता है टू द डोमेस्टिक कंट्रीज। तो ये फिनोमिना है दिसंबर का। मेरे को लगता है हमारी मार्केट्स में दोबारा पैसे का जो एफपीआई मनी है वो दोबारा आनी शुरू हुई है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, नवंबर के अंदर जो आरबीआई ने थोड़े से रूल्स को ट्वीक करा था, उन्होंने कहा था कोई भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट
किसी कंपनी में होता है जहां पर 10% से ज्यादा ऊपर स्ट्रेटेजिक स्टेक है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एफडीआई, नॉट एफपीआई। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है, और क्लासिफिकेशन के लिए टेक्निकल है, लेकिन उसके अंदर जो एक एरिया होता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि सेक्टर वाइज एक एलोकेशन है, एक परसेंटेज है जिससे ऊपर एफपीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी स्टॉक के अंदर। तो जब वो एफपीआई मनी एफडीआई में कन्वर्ट हो जाती है, उनके पास स्कोप बढ़ जाता है एफपीआई का उस स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ये बड़ा पॉजिटिव मूव था जो कि नवंबर में लिया गया है आरबीआई की तरफ से। ओवरऑल मैं आपको बोलूं कि जो ये डॉलर की जैसे आउटगो हुआ था, वैसे हमारे पास रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, पूरे एक साल के हमारे कंटीजेंसी रिजर्व्स हैं, और ये बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखा जाए तो यहाँ हम सेकंड या थर्ड कंट्री हैं जिसके पास इतने बड़े फॉरेन के रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं। और आने वाले टाइम में जनवरी में दोबारा एलोकेशंस होती हैं, फंड दोबारा आते हैं पूरे, जैसे एशिया स्पेसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिक फंड्स एलोकेशन होती है, तो ये फंड वापसी आएंगे, और मेरे को लगता है कि वहां पर हमारे रिजर्व जो हैं दोबारा जितने कम हुए थे दोबारा बढ़ेंगे। एफडीआई में बहुत जोर है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा, जैसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमने पीएलआई स्कीम्स हैं, तो बड़े इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वर्ल्ड के अंदर कहीं पर नहीं हो रही जो इंडिया दर्शा रहा है और अपने प्रोजेक्ट कर रहा है, चाहे उसको टेम्पर डाउन भी करा है सारे सबने, तब भी हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो जहां पर भी पैसा वहीं लगता है जहां पर ग्रोथ होती है, तो मेरे को लगता है ग्रोथ को चेज करने के लिए एफडीआई काफी आएगी, पैसा काफी आएगा, और हमारे रिजल्ट वापसी बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने कहा ग्रोथ की लेके बात की, लेकिन हमने हाल के वक्त में जब से दूसरी तिमाही का जब 5.4% का जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया, और वो जो 7 तिमाही था उसके लो पे हमने उसको नंबर को देखा, उसके बाद से जो तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने उस नंबर को घटा दिया। अब हमारे सामने हम चार्ट भी दिखा रहे हैं, 6.3% मॉर्गन स्टैनली ने कर दिया अपना ग्रोथ रेट का अनुमान घटा के, जेपी मॉर्गन ने 6.4 कर दिया। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जब इस फिस्कल के लिए 7.2% का ग्रोथ रेट का अनुमान था, और आज उन्होंने उसको 6.6% कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री हालांकि अभी भी उसको 6.5 से 7% पे लेके चल रही है, लेकिन बाकी भी चाहे बार्कलेज हो, गोल्डमैन सैक्स हो या दूसरे बैंक हो, 6% तक की ग्रोथ का अनुमान कर रहे हैं। जबकि पिछले अगर हम बात करें 4-5 साल से, तो ग्रोथ के हमारे नंबर्स अच्छे रहे हैं। आपको मैं आंकड़े दिखाऊं तो FY24 में 8.2% की ग्रोथ आई, और हम 7% से लगातार ऊपर पिछले 3 साल से बने हुए हैं। सर, जो ग्रोथ को लेके आरबीआई गवर्नर ने आखिर में ये बात उन्होंने कही है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को पे हमारा फोकस बना हुआ है, और अगले साल के Q4 में वो कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आएगी। खाद्य महंगाई एक बड़ी जो है वो मुसीबत बनी हुई है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब 6.5% के रेपो रेट पे हैं। क्या ग्रोथ रेट नीचे जा सकती है इसके महंगाई के असर की वजह से? इस पे क्या आने वाले टाइम में रेट कट को लेके आप किस तरह से देखते हैं? अब कब आरबीआई कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, जहां जो उनको 2 से 6% का एक मैंडेटरी उनको दिया हुआ सरकार ने कंफर्ट जोन, उसके अंदर कब महंगाई स्टेबल फॉर्म में आएगी? देखिए, आज जो हमने सुना है, उन्होंने 4.8% का टारगेट, और उनको बोला है कि हम अपना इन्फ्लेशन जो है 4.8 के करीब आ जाएंगे। और रहा रेपो रेट की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं यहाँ पर स्टार्ट होगा, कोई कट जरूर आएगा, क्योंकि फेड ने, यूएस फेड ने काफी बड़ा कट दिया था अक्टूबर के अंदर, और 25 बेसिस पॉइंट उसके दोबारा उन्होंने कट लिया था वहां का इंटरेस्ट रेट पे। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने और बाकी कंट्रीज के अंदर जो रेट कट आया था, तो हमारे को लगता था ग्रोथ को देखते हुए ये ग्रोथ जैसे टेम्पर डाउन हुई है पिछले क्वार्टर में, 2-2.5% के करीब आई है, तो यहाँ पर हमारे को लग रहा था थोड़ा कट आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है सारी इकोनॉमीज के लिए, सारे सेंट्रल बैंक्स को एक काफी उनको चिंता का विषय है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि हमारे गवर्नर और एमपीसी ने इसको कट नहीं करने दिया। रही बात, मैं ग्रोथ की बात बताऊं, जो 6 से 7% जो है हमारा एवरेज है, हम इस रेंज के अंदर रहते हैं जीडीपी की ग्रोथ के अंदर। जब भी हम 7 से
9% या 8 से 9% होते हैं तो हम हाई ग्रोथ पे आते हैं। अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं जो कि 6 से 7% ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में अगर आप देखें कोई भी जो ग्रोथ है 2-3% से ऊपर नहीं है, प्लस वहां पर भी इन्फ्लेशन का इशू है। तो ग्रोथ मेरे को लगता है जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का काफी फोकस है, पीएलआई स्कीम्स हैं, सेमीकंडक्टर, ईवी, ये ग्रोथ इंजन हैं। ऑटोमोबाइल हमेशा ग्रोथ इंजन होता है, उस पर काफी जोर है इंडिया का। और यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी की कंजम्पशन नहीं, एक्सपोर्ट के लिए काफी फोकस किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, China+1 पॉलिसी है, तो उसमें इंडिया की तरफ काफी देखा जा रहा है। तो ग्रोथ हमारे को लगता है कि हमारे को अगले क्वार्टर में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आरबीआई गवर्नर और बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर जो होगा अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी से मार्च वाला, इसमें हमारे को ग्रोथ काफी दिखेगी। हम लेकिन सर उसी यहाँ लेवल पे 7% के लेवल पे हम कहीं पर देख पाएंगे ग्रोथ को। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वही बात कल हमने सीईए जो है सी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने भी ये कहा था कि ग्रोथ को लेके जो दूसरी तिमाही का नंबर है वो भले ही कमजोर है, लेकिन इंडिया के अंडरलाइंग ग्रोथ स्टोरी वो इंटैक्ट है, मजबूत बनी हुई है, ऐसा उनका बयान था। लेकिन मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि चाहे हम ऑटो सेल्स के नंबर देख रहे हैं, कंपनियों को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उनके पास इन्वेंट्रीज बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है। ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि रोजगार बड़े पैमाने पे पैदा होते हैं, उसके साथ कंपोनेंट जो ओईएम है वो जुड़ी हुई है, एंसिलरी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, वहां भी नंबर डाउन है, वहां पे भी कंपनियों को डिस्काउंट लाने पड़ रहे हैं। ये स्लो डाउन का, दूसरी तरफ अगर हम एफएमसीजी कंपनियों को देखें तो वहां भी खपत कम है, रूरल एरियाज में खपत कम है। ये जो कंजम्पशन है, जो जो बिक्री है, उसमें कमी आ रही है, और एक जो स्लो डाउन का माहौल आखिर वो अचानक से बनना शुरू कैसे हुआ, सर अगर आप थोड़ा सा बता पाए। देखिए, टिपिकली हमारे यहाँ पर फेस्टिवल सीजन और दिवाली की जो सेल्स हैं, उसमें काफी जो जितना भी स्टॉक होता था वो काफी हमारा काफी खत्म हो जाता था। बट इस साल हमने देखा है कि खासकर 4 व्हीलर की डिमांड जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, वो काफी कम रही है, काफी सेल्स कम रही हैं। और जो उनके पास स्टॉक पाइल्ड अप हुआ है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आरबीआई गवर्नर ने भी पीछे कई स्टेटमेंट्स में, कई फोरम में जाके बोला है कि इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। बट आप उसी तरफ देखिए, अगर टोटल ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो 2 व्हीलर के अंदर बहुत अच्छी सेल्स आई है। 4 व्हीलर के अंदर इशू है, वहां पर इन्वेंट्री है, लेकिन 2 व्हीलर के अंदर काफी सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है, जो कि दर्शाता है कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो पहले से बेटर हुई है। और हमारे यहाँ जो फसल है वो भी बम्पर फसल होने की उम्मीद है, इस बार हुई है, जो रेंज काफी अच्छी हुई है। तो रूरल इकोनॉमी एक हमारा एक इंजन है, बहुत बड़ा कंजम्पशन का सोर्स है। और मेरे को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है काफी कंसर्न्ड है 4 व्हीलर और ये इसकी सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ विचार विमर्श किया जाएगा और इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, जिससे प्राइस पॉइंट कम किए जाए और ये इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है इसको कहीं से इसको हैंडल किया जाए। बट ग्रोथ पैटर्न, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट है। एक बीच में साइकिल्स आती हैं, बीच में एक क्वार्टर्स आते हैं जहां पर कम होती हैं। टिपिकली पिछला क्वार्टर हमारे लिए काफी कम रहा है, ग्रोथ कम रही है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग ए फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल का क्वार्टर था, लेकिन उसके अंदर भी हमारे यहाँ पर वैसी कंजम्पशन नहीं आई जो कि पिछले सालों में देखी गई है। वो कॉज ऑफ कंसर्न है, बट गवर्नमेंट इज वेरी ऑफ इट। कंटिन्यूअसली हम भी बात करते रहते हैं डिफरेंट फोरम्स में, फ्रॉम द चैम्बर्स, तो दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट। कोई ना कोई इसमें एक्शन होगा और ग्रोथ हमारे को वापसी दिखेगी। अंडरलाइन हमारी डेमोग्राफी ऐसी है और जो रूरल इकोनॉमी कंजम्पशन स्टोरी ऐसी है कि एक आध क्वार्टर छोड़ दीजिए, ग्रोथ अभी यहाँ पर अगले 10-12 साल में अच्छी ग्रोथ है इंडिया में। बिल्कुल, आपने कहा कि आपकी इंडस्ट्री में भी बात होती है और ओवरऑल फीलिंग ये है कि आगे चल के ग्रोथ फिर से पटरी पे लौटेगी। और इसी बात को लेके पीयूष गोयल ने भी पिछले महीने हमने देखा था, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिजर्व बैंक को अब रेट कट करना चाहिए, उनको रेट्स को फूड इन्फ्लेशन के साथ
पकड़ के नहीं रखना चाहिए, लिंक नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें अलग हैं। और इस तरह सर आप क्या, और इसके बाद ये बात सामने आ रही थी लगातार कि सरकार आरबीआई पे एक प्रेशर बना रही है कि रेट कट किया जाए, इस तरह का। हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी देखा, और जब उन्होंने ये कहा कि बैंकों को रेट्स कम करने चाहिए ताकि इंडस्ट्री को सस्ता कर्ज मिल सके। सर क्या रिजर्व बैंक सरकार के प्रेशर से अलग जो दूसरी मैक्रो चीजें हैं उसको देख के उनका आज का जो स्टैंड है वो आया है, या सरकार का रुख सही है इस मामले में कि हाँ आप रेट कट होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इन्फ्लेशन ये सारा एक विशियस सर्कल है। इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो हमारा कोई भी काम करने का है, वो उसका मेजर कंपोनेंट रहता है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट अगर कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बाकी इनपुट कॉस्ट सारी कम होती हैं। हमने देखा एक जैसे वेरियस कंपोनेंट होते हैं इनपुट के, उसमें एक फाइनेंस एक बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट होती है। उसी तरह से फ्यूल एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जो कि हमने देखा काफी कम आया है, $90 से $70 के करीब हमारा क्रूड आया है। तो वहाँ इनपुट कॉस्ट में काफी ठीक हो गया है। उसी तरह से लेबर कॉस्ट है, वो उसमें भी कोई ज्यादा इंक्रीमेंटल कुछ बढ़ नहीं रही, सैलरीज वगैरह और वेजेस कुछ ऐसी नहीं बढ़ रही। बाकी दोनों फैक्टर काफी ठीक हैं। एक फाइनेंस वाला कॉस्ट जो है उस पे कंसर्न है, गवर्नमेंट ने अपना व्यू दिया है। लेकिन हमारे यहाँ सारे अच्छा इंडिया के अंदर क्या है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन इन प्लेस हैं, एमपीसी है, दे टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। बातें गवर्नमेंट की सुनी जाती हैं, बट आप देखिए अगर जैसे वित्त मंत्री ने या कॉमर्स मिनिस्टर ने इंडिकेट करा कि इस वक्त जरूरत है, लेकिन एमपीसी ने अपना स्टैंड लिया, उसने कहा है कि हम इसको अभी कम नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो यही दर्शाता है कि वो इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं, उनकी सुनते जरूर हैं, जैसे सबकी सुनते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं तो उनकी सुनी जाती है, बट दे टेक द फाइनल कॉल। तो एमपीसी ने फाइनल कॉल, आरबीआई ने फाइनल कॉल ली है। हमारे को जो है एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए। वर्ल्ड में जैसा हो रहा है तो मैं बोलूंगा जैसे हमारे रेगुलेटर सेबी वगैरह, दे आर अहेड ऑफ एनी अदर रेगुलेटर। इसी तरह आरबीआई हमारा यहाँ रेगुलेटर है बैंकिंग के, दे आर अहेड ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड ओवर में। अब वो नहीं है कि हम फॉलोअर हैं, बाकी जो करते हैं तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, दे आर वे अहेड ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन, अदर रेगुलेटर्स। तो हमारे को उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। रही बात गवर्नमेंट के व्यू की, हम भी यही व्यू लेते हैं कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ जो फाइनेंस है वो कम होना चाहिए, काफी ज्यादा है। तो क्या सरकार के साथ जो रिप्रेजेंटेशन आपके जाते हैं, चूंकि आप फिक्की, एसोचैम उनके साथ जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री की सारी चीजों को और गहराई से देखते हैं, नब समझते हैं, क्या सरकार के पास आप लोगों के जो प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, बात होती है, सरकार का उसमें क्या कहना है कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है? हालांकि इसमें एक चीज मैं और बताऊं, बैंक जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी खुद की कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, जो उनको पैसा मिल रहा है वो खुद भी काफी ऊंचा है, और हाल के वक्त में उन्होंने होम लोन के रेट्स और हमने देखा कि बैंकों ने बढ़ाए हैं। तो क्या कॉस्ट ऑफ फंडिंग अभी भी ऊंची रहने वाली है? एमएसएमईज को फंडिंग मिलने की जो दिक्कतें हैं वो भी लगातार बार बार सामने आती रहती हैं। देखिए, बैंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स होता है कासा, जो कि बैंक्स के अंदर करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स होते हैं। पीछे हमने देखा कैपिटल मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया 2-3 साल में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर काफी नए अकाउंट खुले और काफी पैसा वहां गया। तो जो हमारे यहाँ हाउस होल्ड सेविंग होती थी, हाउस होल्ड सेविंग से हम कई सालों से बोलते आए हैं कि हमारे को वो सेविंग को चैनलाइज करना है इन्वेस्टमेंट में। तो वो चैनलाइज हुई इन्वेस्टमेंट में काफी, लेकिन उससे क्या हुआ, प्रेशर जो है, जो उसका रॉ मटेरियल था बैंक्स का, जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते थे, वो पैसा चला गया इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो बैंकों को वो जो पैसा मिलता था वो मिलना बंद हुआ, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो थोड़ी बढ़ गई, जिसकी वजह उनके लोन्स भी आगे, लोन के इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़े। इसके ऊपर भी आरबीआई की तरफ से काफी बयान आए हैं और उन्होंने कंसल्ट किया है सेबी को और बाकी रेगुलेटर्स को
कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को अगर हमारे को ग्रोथ देखनी है 8-9% की, और हमारे को फिर वही 10 ट्रिलियन और 25 ट्रिलियन पे पहुंचना है, तो हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो कम होनी चाहिए, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और अदर ग्रोथ के अंदर। देखिए हाउसिंग सेक्टर हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस रेट पे हम हाउसिंग लोन देते हैं ये काफी हायर रेट्स हैं, ऐसे होते नहीं है, तो इसको कम करने की जरूरत है। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट इज कॉशियस ऑफ दिस फैक्ट, और वो बार बार अपना स्टैंड लेती रहती है कि इसको कम करने की जरूरत है। हमारी तरफ से भी, चैम्बर्स की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से ये बार बार बोला जाता है। तो मेरे को लगता है अगर इस बार नहीं, जैसे अभी रिपो रेट को नहीं छेड़ा इन्होंने, लेकिन सीआरआर को छेड़ा है, तो अगली बार हमारे को लगता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे अगली एमपीसी। बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि अगली एमपीसी जो कि फरवरी में होगी उसमें रेट कट होने की आप बात कह रहे हैं। और आपने एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण की वो ये कि जो बैंकों के पास जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पैसा है वो आने में उसमें पिछले कुछ वक्त में कमी आई है, और हमने क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकों की है वो डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा देखी। हालांकि अभी जब हमने नवंबर के हालिया आंकड़े देखे थे तो उसमें डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी उसने आउटपेस किया है क्रेडिट ग्रोथ को। लेकिन सरकार के सामने, आरबीआई के सामने इस बात की चिंता तो है ही। और एक और यहाँ मैं दर्शकों को और सर आपको बताऊं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वहां पे भी जो सरकार ने जुलाई में जो आंकड़ा दिया था वहां जो कलेक्शन का, वो भी ऐसी खबरें आई हैं कि मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम, तो जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा जा रहा है या जो शेयर बाजार में पैसा जा रहा है उसको लेके सेबी, आरबीआई स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं बैंकों के सामने, ऐसी बात कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा बस चलते चलते कि अब बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट सरकार लेके आने वाली है। क्या जो ग्रोथ का की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है, लोगों के पास खर्च लायक पैसे जो कम है, उसको लेके सरकार क्या कुछ बजट में कुछ ऐसे ऐलान कर सकती है, ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे इस चीज को, क्योंकि हमने पिछले जो बजट आया उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स सरकार ने अपनी तरफ से दिया, लेकिन अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में किन चीजों का पे फोकस हो सकता है सरकार का? देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है वेलफेयर इकोनॉमी है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, जिसमें कि जब डेवलपिंग स्टेज होती है, पूरे वर्ल्ड का यही पैटर्न है कि आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे देते हैं कंजम्पशन के लिए, जिससे कि ग्रोथ प्रोपेल हो। तो यही पिछले कई बजट का फोकस रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी है, और इसी तरह से रूरल इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आए, ज्यादा स्पेंडिंग हो और वो ग्रोथ प्रोपेल हो। तो मेरे को लगता है इस बार भी बजट में फोकस यही रहेगा, रूरल बेस्ड इकोनॉमी और रूरल की इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा कोशिश रहेगी। इसी तरह जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, देखिए एक स्टेज के बाद सर्विस इकोनॉमी इतना बड़ा ग्रो नहीं कर पाती, आपको मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ता है। तो हमारा कई 2-3 साल से काफी गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग फोकस करने के लिए, जिससे कि हमारा एक इतना बड़ा पूल है एम्प्लॉयमेंट का, लेबर का, उसको कहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ही एक सेक्टर है। पहले पीएलआई की स्कीम्स आई, उसके अंदर पीएलआई के अंदर नए सेक्टर्स खोलने की मेरे को लगता है बजट के अंदर आएंगे। फोकस पूरा क्लियर है कि हमारे को मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है, गवर्नमेंट का फोकस है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, या बाकी दूसरे सेक्टर्स हो जहाँ की सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोबाइल है, ये सारा बाहर से इंपोर्ट होता था। तो इसमें कई स्टेटमेंट्स आई हैं गवर्नमेंट की बजट के थ्रू या उसके अलावा भी। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहेगा अगला बजट भी। थोड़ी ट्वीकिंग की जरूरत है, जैसे आपने भी बोला, जीएसटी के रेट्स अभी हमने देखा, जीएसटी काउंसिल ने बहुत रेट्स बढ़ाए हैं जो कि मेरे को कई इलॉजिकल लगते हैं। आप एक साइड में कह रहे हैं कि हम टॉप 2 इकोनॉमीज में हो जाएंगे, 3 इकोनॉमीज में हो जाएंगे, और हम एक डायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस का इतना बड़ा जो बोझ है अगर कंज्यूमर के ऊपर आएगा तो वो बड़ा मुश्किल है उसके अंदर। तो हमारे को, आपको एक ये चीज हमेशा देखनी है कि एक बैरियर के बाद, एक स्टेज के बाद कंजम्पशन बहुत इफेक्ट होती है।
टोटली इलास्टिक है, आप बढ़ाते रहेंगे उसकी कॉस्ट को तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। देयर इज ए इलास्टिसिटी टू द डिमांड विद द कॉस्ट, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है गवर्नमेंट को। बाकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना एक बहुत अच्छा मूव है, जो 2-3 साल में हमने देखा है गवर्नमेंट फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उसी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से प्री बजट हमारी डिमांडें जाती हैं, सजेशन जाते हैं, हम प्री बजट में उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं, मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से, तो हम अपनी बात कहेंगे जहां जहां जरूरत होगी। बिल्कुल, जरूर। और उम्मीद है इस बात की कि जब आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे वित्त मंत्री से, तो उनसे इन बातों का जरूर, जो लोगों पे जिस तरह का बोझ है, महंगाई का बोझ, आप भी जो जिक्र कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी है, या दूसरे जिस तरह के जो जीवन जीने का खर्च है, वो पिछले कुछ वक्त में चाहे टोल टैक्स हो वो बढ़े हैं, उसको लेके लोगों में एक परेशानी है, और उसकी वजह से उसका असर हम कंजम्पशन पे होते हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपने इस शो में हिस्सा लिया और हमें और हमारे दर्शकों को बेहद अहम जानकारियां दी आरबीआई एमपीसी से जुड़ी हुई, और उन ग्रोथ को लेके और बाकी रेट का कब हो सकता है उसको लेके एक आउटलुक दिया। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठ के और चीजों पे डिस्कशन कर पाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ इस लाइव में अब इतना ही। आगे एमपीसी की मीटिंग में जो आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट और दूसरे जो सीआरआर में भले कटौती की आधा% की, लेकिन रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की, और होम लोन, ऑटो लोन या बाकी जिस तरह के जो आपके ऊपर लोन है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ये बड़े फैसले हैं। आरबीआई ने महंगाई पे अपनी बड़ी चिंता जताई है। ग्रोथ को लेके भी आरबीआई ने अपना जो आउटलुक है इस साल के लिए, प्रेडिक्शन जो है FY25 के लिए, उसको 6.6% कर दिया है, जो पहले 7.2% था। और बाकी की एजेंसियां भी हमने देखा है कि उन्होंने भी रेट को 6% से 6.5% के बीच में घटाकर कर दिया है, जब से Q2 का नंबर आया है 5.4 का। तो इस लाइव में इतना ही। हम अपनी कवरेज को लगातार जारी रखेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बड़ी बातें निकल के आई हैं उसको हम अपनी स्टोरीज के जरिए या दूसरे लाइव के जरिए आप तक लगातार लाते रहेंगे। हमारे सभी दर्शकों का इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।